एक दूसरे के खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ। मोइन साहब, आपसे इसी सवाल पर आपसे भी एनालिसिस हासिल करना चाहूँगी कि दहशतगर्दी का खात्मा तो मिलकर डायलॉग के ज़रिए, इस पर मुनज़्ज़म हिकमत अमली के ज़रिए अमल करके ही मुमकिन हो सकता है, बनिस्बत इसके कि एक दूसरे के मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जाए। ये सही बात है, डायलॉग तरीका, डायलॉग ही से मसले चल रहे हैं। मतलब कि बहुत साल पहले जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था तो इस किस्म के मसले रोजमर्रा ही खड़े होते थे और हम उनको यकीन दिलाते थे कि जो आपका दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है, और अगर हमारी सरजमीन पे बैठा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको जो है न्यूट्रलाइज करें या खत्म करें। लेकिन वो इस बात पे मुस्तर रहते थे कि हमको इजाजत दें कि लोग भाग ना जाए बॉर्डर से, तो बॉर्डर के नजदीक हमको अपॉर्चुनिटी मिले तो हम बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आके उनको मारें। हमने कहा हरगिज़ ऐसे काम ना कीजिएगा, उससे बहुत पेचीदगियां पैदा होती हैं। हम इस काम के अहल हैं और हम इस काम को कर सकते हैं और हम ही करेंगे। आप हमारी टेरिटरी में दाखिल ना हो, बाकी हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हमेशा कोऑपरेट करते थे उनके साथ। जी मोइन साहब, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त तो यह है कि ईरान ने 3 हमसाय ममालिक की सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। तो मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल को देखा जाए तो यहाँ पर ईरान की अपनी खारजा पॉलिसी कितनी क्वेश्चनेबल हो गई है मोइन साहब? देखिए, जो मैंने 3 मुल्कों का जिसका आपने नाम लिया जी, इराक है, सीरिया है, वहां तो इनके मलेशिया इनके लोग मौजूद है भाई, जो अमेरिकनों से भी लड़ रहे थे और वहां के जो इनके खिलाफ लोग थे उनसे भी लड़ रहे थे। शिया सुन्नी जो वहां पर चढ़ रहा है उसके अंदर भी हिस्सा ले रहे थे, वो तो वहां मौजूद हैं। जो हमला किया सबको पता है, अमेरिका पहले भी अमेरिका के हमले करते रहते हैं अमेरिकनों के ऊपर, तो वो वहीं पर उनके जो हथियार उनको दिए हुए हैं, रॉकेट दिए हुए, वहीं से बैठ के हमले कर रहे हैं। ये तो मालूम है अभी जिस तरह हूती है, अब उन्होंने उनके पीछे भी सुना है ईरान है इस वक्त, और वो अमेरिकन जहाजों पे हमले कर रहे हैं, तो अमेरिका और यूके जो है वो यमन पे बमबारी कर रहे हैं। तो एक मसला खड़ा हो रहा है और इस मसले को ये तो बहुत बड़ा फैल जाएगा और बहुत खतरनाक बात दुनिया के लिए हो जाएगी। ये बात ईरान को समझनी चाहिए। और ये मोइन साहब, ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने कभी तवक्को नहीं की थी ईरान की जानिब से इस तरह के किसी इकदाम की। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शंस करीब हैं, अब आने वाली हुकूमत पर कितनी बड़ी और इंतहाई अहम जिम्मेदारी अब आयद होती है कि आप अपने हमसाय ममालिक के साथ, जैसे बिलखुसूस इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अब डायलॉग को आगे लेकर चला जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और ये अब चूंकि मसला है तो उम्मीद है कि इसी दौर में अनकरीब इसको हल कर लेना चाहिए। बातचीत के जरिए से अपने जो है टेम्पर्स को डाउन करना चाहिए, मिजाज को ठंडा करना चाहिए, और दोबारा से सफीर जो है उनको अपने अपने मुल्कों में काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि हालात नामुलायिज हों। ईरान से हमारी काफी ट्रेड होती है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, दोनों मुल्कों से जो है इससे फायदा उठाते हैं। तो जाहिर है कि इसको हम सिस्टम को छेड़ना नहीं चाहिए हमें। तो बाकी जो है कि ये तो मेरे ख्याल में हर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि सब नेबर्स के साथ ताल्लुकात ठीक किए जाएं। बस इसमें से साथ भी आगे न चल सका, इंडिया के साथ डायलॉग चलता है, हालात कोई बेहतर होते हैं, फिर कोई ऐसा वाकया पेश आता है कि वो हम फिर वापस चले जाते हैं। तब उम्मीद करते हैं देर पा जो है उनके साथ भी ताल्लुकात कायम किए जाए, इससे दोनों मुल्कों को बेहद फायदा हासिल होगा तिजारत में और टेंशन कम होगी। जी, और इसमें आप किन ममालिक का जो किरदार है वो हम देखते हैं, बिलखुसूस OIC को आप समझते हैं कि किस हद तक अपना किरदार निभाना चाहिए, अदा करना चाहिए मोइन साहब? OIC जो है कुछ इतना मौसर किरदार अदा नहीं कर पाती। ठीक, और इसमें तो चाइना मेरे ख्याल में कुछ है, लेकिन चाइना के हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं है। अमेरिका जो है वो मेरे ख्याल में उसका अपना एक एजेंडा है कि जितने लोग आपस में झगड़े करें तो उनके हथियार बिकते हैं, तो ये हमें आपस में खुद ही करना पड़ेगा आर्बिट्रेशन के बगैर। ठीक, बहुत शुक्रिया मोइन साहब, हमारे साथ मौजूद थे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, तलत साहब, सरफराज बुगटी साहब का साथ हासिल था और अपनी आरा से समा के नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान में कार्रवाई की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ऐसा बताना है अपने बयान में, ईरान के सूबे में दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और
मर्ग बर सरमचार नामी ऑपरेशन इंतहाई मरबूत और फौजी हमला था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानब से ये तफसील और ये बयान जो कि इस ऑपरेशन से मुतालिक सामने आ रहा है। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ऐसा बताना है। ईरान में गैर हुकूमती जगहों पर दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानब से ऐसा बताना है अपने बयान में, ईरान में बैठे ये पाकिस्तानी निजात दहशतगर्द खुद को सरमचार कहते हैं। तर्जुमान का ऐसा बताना है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की पनागाहों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलसल इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानब से अपने बयान में ऐसा बताना है कि पाकिस्तान की जानब से दहशतगर्दों की पनागाहों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलसल पाकिस्तान इजहार करता रहा और ये कार्रवाई कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का मज़र है। इंतहाई पेचीदा कामयाब ऑपरेशन मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत का मुँह बोलता सबूत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानब से ऐसा बताना है, पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानब से ऐसा बताना है, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानब से अपने बयान में यह भी वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानब से इस ऑपरेशन से मुतालिक जो वजाहत सामने आ रही है, ये बताना है कि पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद मुतादिद डोजियर्स के साथ शेयर किए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ऐसा बताना है, ख़दशात पर अमल न होने के बायस नाम निहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ऐसा बताना है कि नाम निहाद सरमचारों की जानिब से दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की इत्तला थी। आज सुबह की कार्रवाई मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई और उस वक्त तर्जुमान killed during the intelligence-based operation codenamed Marg Sarmachar. Over the last several years in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists calling themselves Sarmachars on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of those terrorists. However, because of lack of action on our serious concerns, these so-called Sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. As a responsible member of the international community, Pakistan upholds the principles and purposes of the UN Charter, including territorial integrity and sovereignty of member states. Guided by these principles and in exercise of our legitimate rights within international law, Pakistan will never allow its sovereignty and territorial integrity to be challenged under any pretext or circumstances. Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. The Prime Minister of Pakistan, Anwarul Haq Kakar, who is currently in Davos to attend the 54th annual meeting of the World Economic Forum,
has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. At the WEF, Prime Minister participated in the informal gathering of the world economic leaders and delivered keynote address at an event titled Trade, Tech's Trillion-Dollar Promise, and held meetings with participating leaders on the sidelines. Foreign Minister Jalil Abbas Jilani is in Kampala, Uganda, to participate in the 19th Summit of the Heads of State and Government of the Non-Aligned Movement and the 3rd South Summit of the Group of 77 in China. His participation in these important summits is a reflection of the high priority Pakistan attaches to promoting cooperation among the Global South, including on issues related to sustainable development. The Foreign Minister has also cut short his visit in light of the recent developments. The 14th of January marks a painful milestone for the human conscience. It was the 100th day of Israel's war in Palestine, which has taken over 24,000 lives in Gaza, a toll that is escalating with each passing day. The staggering number includes almost 10,000 children and over 6,700 women. The indiscriminate violence by Israel has to end. Humanity must prevail. The international community should play its part in saving the people of Palestine from the barbaric acts of the occupation authorities. The month of January carries painful memories of 3 massacres committed by the Indian forces in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir during the 1990s. Over 50 innocent people were martyred and hundreds were injured when Indian troops had opened indiscriminate fire on peaceful protesters in Gaukadal area of Srinagar on 21st of January 1990. A few days later, on the 25th of January 1990, at least 21 unarmed Kashmiris were martyred by the Indian troops in North Kashmir's Handwara town. On 27th January 1994, a day after India's Republic Day, Indian troops massacred 27 civilians in Kupwara town. We remember the martyrs of these massacres and pay rich tributes to their sacrifices. The perpetrators of these massacres should be held accountable. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. I thank you. Before we start the Q&A questions, I would like to underline that given the developments that are taking place, there's a lot going on and we won't have a lot of time for our briefing. So I would request all of you to have one question when you ask this question. Please don't repeat a question which somebody else has asked so that we can cover more people. If you have more than one question, then it would be my prerogative to answer the questions that I like. So with that, let's start with इससे शुरू करते हैं. हाँ जी, खालिद साहब से शुरू करते हैं आज. मैडम, दोबारा से ईरानी फोर्सेस जो हैं वो तैयारी कर रही हैं और इतलात यही हैं कि उन्होंने दोबारा से मिसाइल जो हैं वो रेडी की है. अगर वो इस तरह की दोबारा ये करते हैं, हरकत करते हैं, तो क्या पाकिस्तान उसका जो फ़ौरन वही जवाब देगा जो पहले आज दिया है? I would not like to indulge in speculation. Pakistan has said that we would like to have peaceful relations with all countries in the region, including with our neighbor Iran. And we have also said that Pakistan's security and sovereignty is sacrosanct, and Pakistan remains ready and is willing to protect itself. Thank you.
एक सवाल. Thank you, ma'am. As there was an earlier statement made by you that Pakistan carried out strikes, would you like to share details of these strikes, whether it was through regular Pakistan Air Force or through drones or missiles, and what are the details of casualties? Thank you. It is my understanding that these details will be coming soon from ISPR, so I will not indulge in operational details. Ji Azad sir. Irani state media has recently reported that they have also sought explanation from Pakistan, although they have attacked it first and we have retaliated. But their state media is saying that they have sought some kind of explanation from Pakistan. Have you received any kind of communication from Iran? As you know, this incident took place this morning, and at this point I'm not aware of any contact that took place in the last 2-3 hours. Yes, our friend from Irna. Salazar from Iranian Instant News. Ma'am, there are some reports regarding some countries trying to de-escalate the tension between two brotherly countries. So is there any... Thank you very much. As I said earlier, Pakistan considers the people of Iran as our friends and brothers, and we have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this, and we also believe that acts like the one which took place a couple of nights ago create difficulties and give the adversaries of our friendship the pretext to create more difficulties in the region. Ali Hussain. Ji, thank you, ma'am. Ali Hussain from Business Recorder. Iran violated Pakistan's sovereignty and carried out strikes inside Pakistan, and Pakistan in response retaliated and carried out the same strikes inside Iran. What next? Is there any channel of communications between the two countries currently to de-escalate the situation, or where both the countries are heading toward? Thank you. As I said earlier, Pakistan has also always emphasized dialogue and cooperation, and we have always chosen a path of dialogue. We also believe that dialogue and cooperation is essential for confronting common challenges, including the menace of terrorism. And we would like to continue to engage with our neighbors to combat this menace and to ensure that peace prevails and sorry, मैं तो सवाल क्या मैंने क्या कहा? We will continue to engage with our neighbors, including Iran. If we are talking about Iran, with our neighbor Iran. Okay, आपने interrupt ही कर दिया मुझे हैं. We will continue to engage with our neighbor Iran to ensure that peace prevails and there is and that the two countries make concerted and coordinated efforts to combat the threat of terrorism. Ji Anas. Thank you so much, ma'am. Has there been any efforts for a third-party mediation by regional stakeholders
And if so, what is Pakistan's response? Any countries that you would want to mention if there has been an effort at all? Thank you. I am not aware of third-party mediation, as you mentioned. Pakistan and Iran do have several channels of communication, and at this point, I am not aware of any third party stepping forward in this context. Jalil Saab. China has urged restraint, asking Pakistan and Iran to exercise restraint. Has China approached Pakistan and Iran for any mediation? Because China is a very close friend of both Pakistan and Iran. And earlier they also mediated to escalate the situation between Saudi Arabia and Iran. What are your comments, please? As I just said, I am not aware of any mediation by any third party that has taken place or is on the horizon. हाँ जी, राशिदा को दें। थैंक यू सो मच मैम। ये बता दीजिए कि ये जो ऑपरेशन सरमचार था, इसमें BLA और BLF के हाइडआउट्स को टारगेट किया गया या नहीं? Again, on this question, please wait for an advice from ISPR, which will be coming shortly. हाँ जी, निज़ामी साहब को। थैंक यू मैडम। मैडम, हमने बर्ग अमेरिका सुना, बर्ग इज़राइल सुना, एक नई आपने नाम दिया है बर्ग सरमचार। इसकी कोई ख़ास वजह है? ये फ़ारसी में मैसेज दिया गया है, इंटरेस्टिंग नेम है। I am not an expert in Persian language, so I cannot comment on its how interesting it is. But this is a code name, which is, as you know, it was an intelligence-based operation, and our military authorities and ISPR would be better positioned to respond to this question. हाँ जी, Madam को दें, सारा को. Thank you. So, in your opening remarks, you said that the terrorists that were killed were Pakistani. So, how has that already been established? How have their identities been established already? Pakistan for the last several months and years have been in contact with Iran authorities, and we have shared with them concrete evidence of the presence of these terrorist hideouts inside Iran, and that is why we are very confident of the statement that we have made. For further details, please wait for an advice from ISPR. Ji, Sumaira. तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं और वो बता रही थीं कि ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सीस्तान में कार्रवाई की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये भी बताया गया, ईरान के सूबे में दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मर्ग बर सरमचार नामी ऑपरेशन इंतहाई मरबूत और फौजी हमला था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से यह भी बताया गया, इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुताद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं। ईरान में गैर हुकूमती जगहों पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। ईरान में बैठे ये पाकिस्तानी निजात दहशतगर्द खुद को सरमचार कहते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की पनाहगाहों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलसल इजहार किया। तो पाकिस्तान की जानिब से यह मौक़िफ़ दिया गया कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही दहशतगर्दों की पनाहगाहों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का ईरानियन गवर्नमेंट के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलसल इजहार किया है। ये कार्रवाई कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। इंतहाई पेचीदा कामयाब ऑपरेशन मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से यह भी कहा गया, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
डायपर चेंज के दौरान बेबी करे मस्तियाँ और क्रीम्स लगाना हो जाए नामुमकिन, तो ट्राई करें पैम्पर्स पैंट्स, जिनको पहनाना बेहद आसान। बस पुल अप करें और उतारने के लिए साइड से टियर करें। पैम्पर्स में है लोशन विद एलोवेरा, जिससे बेबी को मिले रैश प्रोटेक्शन ऑल डे एंड नाइट। तो आज ही ट्राई करें पैम्पर्स पैंट्स। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय, एक और कप चाय टपाल दानेदार। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। अपोलो का नया शेफ हॉट पॉट जो ले आई हूँ, जो खानों को रखे 4 से 6 घंटों तक गर्म, क्योंकि अपनों का ख्याल तो थोड़ा एक्स्ट्रा रखा जाता है। अपोलो हाउस फेयर, ख्याल थोड़ा एक्स्ट्रा। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। Best commute for every route. This is Yango, the ride booking app. जो दे आपको safe and reliable rides at the most affordable price. After launching across Pakistan, Yango is now live in Karachi. Download the app and get ready to go. Yango, we take you there. Don't worry, right साहब राइड कर देगा। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। मंथली एक्सट्रीम प्रो मैक्स ऑफर, जिसमें मिले 100 GB डेटा और अनलिमिटेड टेलीनॉर मिनट्स के साथ 800 अदर नेटवर्क मिनट्स। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय, एक और कप चाय टपाल दानेदार। Best commute for every route. This is Yango, the ride booking app. जो दे आपको safe and reliable rides at the most affordable price. After launching across Pakistan, Yango is now live in Karachi. Download the app and get ready to go. Yango, we take you there. क्या बना रही हो? कश्मीरी चाय। कश्मीरी चलो 1-2 दिन में तो बन ही जाएगी। नेस्ले एवरीडे कश्मीरी चाय, सिर्फ खोलें, घोलें और मजा उठाएं। अब 180 ग्राम पैक में भी अवेलेबल इन स्टोर्स। आज का कड़क चैलेंज, कड़क चाय का कड़क दाग निकाल पाएगा एरियल? एरियल, जो कपड़ों की तह से निकाले चाय जैसे कड़क दाग, सिर्फ एक धुलाई में। राबिया का बेस्ट फ्रेंड, उसका कैमरा।
और कितना खींचोगी? अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी है, उसकी खूबसूरती की। जब तक दिखाऊंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं इसके ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, जरासीम को भी नहीं। इसीलिए लाइफ बॉय। बड़े ख्वाबों को दें लाइफ बॉय की बड़ी हिफाजत, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी, मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। एक मिनट नसीम भाई, ये कड़क चाय भी। अब ये कौन साफ करेगा? एक्सप्रेस पावर। ये सारे दाग तो हम पहले से साफ कर रहे हैं बच्चों, धुलाई में बराबर और बचत पूरे 200 रुपए की। Pakistan's largest innovation expo, Future Fest, is back for the 3rd year. Join us at Expo Center Lahore on January 26th, 27th and 28th.